हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 2 इन ब्यूटीफुल रोमांटिक पेरिस। हम जैसे ही आए, इट्स लाइक अ डिफरेंट मैजिक हियर। सो वी didn't take any breakfast from the hotel, any breakfast, lunch or dinner package, because Paris is haven of cafes and restaurant. सो हम लोगों ने डिसाइड किया था विल गो एंड हॉप डिफरेंट डिफरेंट कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट फॉर आवर प्रॉपर मील। आज का हमारा पूरा दिन हम लोग मोमार्ट आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वो नेबरहुड में जाने वाले हैं। एंड बिफोर दैट वी विल जस्ट हॉप वन कैफ़े, विल डू प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड विल शो द हाउ द बेस्ट नेबरहुड ऑफ पेरिस लुक्स लाइक। Montmartre is hardly 1 kilometer from our place, so we decided to go by walk, क्योंकि walk करते करते ही you can see lot of best places while you are going there. बहुत ही क्यूट लेन, देन क्यूट रेस्टोरेंट थे एंड हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो पूरा मोस्ट ऑफ प्लेसेस बहुत खाली थी। This is my favorite stuff, fruits. I am the biggest fruit lover. So we are walking towards the famous Montmartre street. Look at this. We decided to walk only here because आप चलते चलते बहुत सारे कुछ places explore कर सकते हो. It takes lot of steps to get here. हमारे दिन के complete steps उस दिन goes to around 15,000. So think हम लोग कितना चले थे. हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कैफ़े सिलेक्ट करके रखे थे बिकॉज इट वॉज अ संडे और मोस्ट ऑफ कैफ़े विल बी फुल, तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन आवर फूड चॉइसेस वी डिसाइडेड एडलिन फॉर आवर फर्स्ट ब्रेकफास्ट ऑफ द पेरिस. This place offers really yummy breakfast with all the healthies and good desserts, so we decided to eat here. अगर आप पेरिस में ब्रेकफास्ट कर रहे हो इन पर्टिकुलर कैफ़ेज़, सो really good food and everything nice, proper like Parisian food and healthy food, so it will cost you around 35 euro to 45 euro, which can you assume 3,500 to 4,500, because food is quite expensive compared to coffee and other beverage, so it will cost you around that much only. So on an average हम लोग daily expense for the food for the particular Paris, we decided we'll go for the 100 euros to 120 euros, depend where we are. And that was pretty planned ki we used to carry our money, that's it, and extra cards also. I'll explain on that totally proper way. This is the famous Les Maisons, and we are roaming around to famous busiest street of Montmartre. There is a lot of souvenir you can purchase to give to your parents or family. This is the famous Basilica Sacré-Cœur, which is known as the most second visited place in overall Paris, France. This is basically a Roman Catholic church located on the highest point in Paris, France, and it was designed by architect Paul Abadil in 1875. And this is a really best area to observe full Paris into the 360 degree. After they obviously Eiffel Tower, but आप यहाँ से बहुत सारे places easily 360 degree से view कर सकते हो, proper panoramic view. And definitely, as I mentioned, this is one of the second largest landmark, most visited landmark. तो थोड़ी संडे था and थोड़ी rush तो थी यहाँ पे, pretty crowd था, but it was a manageable, not that much compared to other days.
This is how Basilica looks from the inside. After Basilica, we came to the main street of Montmartre, जहाँ पे proper shopping place, mini shopping place, painting, lot of cute cafes are there. As I mentioned, it was Sunday, तो हम लोग proper landmark visit के लिए नहीं गए थे because we know कि we are going to end up with lot of line and rush. तो हम लोगों ने decide किया we'll take a walking tour of Montmartre area. And in evening, definitely we are very impatient, so visited the Eiffel Tower because it was a special day. I'll explain you later. And this is how the cute lane looks like. All are very happy and proper enjoying their they're having their good times. Good Sunday. यहाँ पे मॉर्निंग में कुछ अराउंड 7:45 से लेके ऑलमोस्ट 12 तक थे एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू विज़िट द फेमस आइकॉनिक स्टारबक्स ऑफ पेरिस जो कि है ओपेरा में विच इज़ अगेन नियर बाय आवर प्लेस बट यहाँ के लिए फ्रॉम मोंटमार्ट्रे डायरेक्ट बस थी तो वी डिसाइडेड टू टेक अ बस चार्ज यू हार्डली 1.20 यूरो बट गाइज जितने भी हम लोगों ने बस लिए थे ऑल ड्राइवर्स ऑफर एज अ फ्री राइड आई एम नॉट इवन जोकिंग हमारी ऑलमोस्ट 20 यूरोज तो ऐसे ही बच गए थे दिस इज़ हाउ द फेमस यूनिक लग्जरी स्टारबक्स ऑफ द वर्ल्ड लुक लाइक ये बहुत हॉट ट्रेंड प्लेस है लाइक इट्स टोटली एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ओपेरा एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल वी हैड अ स्मॉल कॉफ़ी जस्ट टू बिकॉज वी वर हियर एंड देन लेफ्ट फॉर दी टू हैव आवर लंच बट लंच के लिए हम लोग हमारे होटल के यहाँ पे नज़दीक एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे गए थे बट ऑन द वे वी एक्सप्लोर सम ऑफ द वॉकिंग शॉपिंग मॉल ऑफ द ओपेरा साइड वी हैड आवर लंच एंड अगेन इट्स कॉस्ट अस अराउंड 30 euros and then we come back to our hotel to proper rest and get ready for our evening activity guys Montmartre is really beautiful neighborhood very picture scenic you can see like every corner is beautiful and it's really worth visit neighborhood we came back to our hotel after lunch take proper rest और evening के लिए रेडी होके हम लोग निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए फाइनली अब हम जा रहे हैं हमारी इवनिंग एक्टिविटी के लिए जो है आईफिल टावर विजिट यहाँ पे आने के लिए अगेन फ्रॉम द होटल ओपेरा देयर वाज अ रियली नियरेस्ट मेट्रो विच वाज अ गैरे डू नोर and which direct train to the Eiffel Tower. We were so happy to see this beautiful view of Eiffel Tower. हम लोग यहाँ पे सिर्फ व्यू देखने के लिए आए थे and to enjoy proper the Eiffel night. This experience was like a next level. Vishal was very happy because Paris and Eiffel Tower was his bucket list. Even I also liked it, but he was very happy. It was like his dream place to be visit, and finally we did it. इट वॉज संडे इसलिए यहाँ पे और भी ज़्यादा रश थी लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ थी कि इट वॉज अ 1 October एंड वेरी यूनिक डे टू विज़िट आईफिल टावर बिकॉज पूरे साल में आईफिल टावर सिर्फ एक दिन के लिए पिंक हो जाता है एंड दैट इज़ ऑन द 1 October बिकॉज ऑफ वुमेंस ब्रेस्ट कैंसर डे एंड वी आर वेरी लकी टू विटनेस दिस
This is like a cherry on top moment for us, and we finally saw the pink Eiffel, which is very unique. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मेट्रो ना, सो आप जैसे मेट्रो से बाहर आओगे वहाँ पे ही यू कैन व्यू द आईफिल टावर। और जैसे जैसे आप आईफिल टावर की तरफ आते जाओगे, देयर इज़ अ वन ब्यूटीफुल गार्डन where people used to sit and just relax and view the Eiffel for the night, and do the small picnic. So you can see lot of couples, families are spending their best time, and we decided to do the same. We even tried to capture the moment how Eiffel Tower started turning slowly the pink. This was very beautiful. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आफ्टर नाइट थोड़ी सी ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है. सो फॉर अ सेफ्टी आई यूज टू कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एनी कंफर्टेबल जैकेट्स और समथिंग. इतने सारे भीड़ में भी वी फाउंड अ प्लेस वेयर वी कैन कैप्चर द प्रॉपर वीडियो फॉर वॉकिंग नियर द आईफिल टावर काइंड ऑफ unique video. We managed to do that and we found a proper place for it. Look at the beautiful moment we captured. हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ उस दिन रिकॉर्ड किए. यू कैन वॉच माई इंस्टाग्राम फॉर ऑल द फोटोज़ एंड वीडियोज़. यहाँ पे हम लोग कुछ 8 बजे तक आ गए थे, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 2 hours प्रॉपर वॉचिंग द आईफिल टावर, हम लोग निकल पड़े हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, विच इज़ अ सीन रिवर क्रूज़, विच वॉज द लास्ट एक्टिविटी फॉर द डे. And we kept it for a night activity because that is the best time to view whole city through the river cruise. हमने ये ट्रिप पैकेज में बुक कर ली थी विद द ओपेरा एंड सीन रिवर क्रूज. वी गॉट दिस ऑफर इन द पैकेज. सो बोट टिकट इंक्लूडेड, वी गॉट इट अराउंड 3,000 rupees per person. And you can utilize the ticket with the particular week of the period, any day, and same for the opera also. There is a particular days you have to utilize that ticket. ये क्रूज़ पूरे 1 hour की रहती है, एंड इट शोज़ यू ओवरऑल ब्यूटीफुल लैंडमार्क्स ऑफ द पेरिस थ्रू दी रिवर क्रूज़. You can choose even the river cruise with the dinner package or the lunch package. आप कोई भी ऐसे दिन में कोई भी टाइम पे you can go for this cruise. If you wanted to involve the meal and champagne, that also you can involve. And there is a different kind of a package you book for the Seine River. बट वी चूज़ टू गो विद द नॉर्मल क्रूज़ बिकॉज हमारे, आई टोल्ड यू बिफोर, कि हम लोगों ने बहुत सारे होटल्स सिलेक्ट करके रखे थे, रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमें फूड टेस्ट करना था. सो वी डिसाइडेड विल गो फॉर अ नॉर्मल क्रूज़ एंड विल हैव वी विल जस्ट चेक आवर बकेट लिस्ट फॉर द रेस्टोरेंट. So guys, this is how we spend our second day in the Paris. Stay tuned for the next vlog, which will be the 3rd day of the Paris, which will be more exciting. Guys, please don't forget to like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you for watching.